চলো let's start. এই পার্টটা একটু দেখে নাও. Draw this. Suppose this is a prism and draw a white light. Now white light is a combination of 7 colors. उसमें से red सबसे ऊपर रहेगा, violet. अब violet ये बैकग्राउंड में ठीक से दिखेगा नहीं, अदरवाइज आई एम ड्राइंग दिस. The colors will start splitting up like this. We know as it passes through the prism, it bends towards the base. ऊपर वाला रे का भी वही हाल है. It will bend towards the base. Like this. And you can say there is a VIBGYOR. इसका बीच में जो कलर रहता है, we call it mean light. That is yellow. We call yellow to be mean light. And this is red and violet. These are. Color change कर लेता हूँ ऐसा. So this red light and violet light appear like this. ठीक है, ड्रॉ कर लो. Now there is a deviation of this ray. Deviation. It was supposed to move along this. This white light was supposed to move along this, but the red light deviates by this amount. We call this delta, that is deviation of red. Similarly, violet light, that deviates by this amount. This is called delta, that is deviation of the violet light. Now the question comes that what is the angle between these VIBGYOR? VIBGYOR means this is violet, this is red, so there is a VIBGYOR. This is yellow, orange, and then red. So this VIBGYOR band of colors, 7 colors, come out together, making some angle between them. Can you look at this beam? मोटा कितना है, पतला कितना है, उसका ऊपर डिपेंड करेगा. So that is called angle of deviation. Or dispersion. So this angle of dispersion, how much angle they have made between themselves, top to bottom, red to violet, when they are dispersing. So this is that angle. How to find this angle of dispersion? That is nothing but delta violet minus delta red. Okay, this is delta violet minus delta red. Now write equals to delta violet is given by A. A means ये माथा angle, माथा का angle of the prism or angle of refraction of the prism. So that is A into mu of the prism with respect to this color. I had told you that mu of the same medium changes if you change the color. So mu of the same prism material will be different if you use different colors. So we are using different colors. सातों color है यहाँ पे. So when we want to find delta of the violet light, this one, this delta violet, then mu violet minus 1 minus delta R, that would be A into mu red minus 1. Okay. So mu violet minus 1 minus mu red minus 1, and that becomes equal to A common
mu violet minus mu red. A common, mu violet minus mu red. So this is the angle of dispersion, या तो angular dispersion. How much angle the rays of color make when a compound light like white light is allowed to pass through the prism. तो वो angle कितना हो रहा है? Delta violet minus delta red, deviation subtracted, and that gives us this value. Now you may be thinking, how come this formula A into mu minus 1, A into mu minus 1 are coming here? We don't know this. So for that, give heading. This is a theory. Thin prism. This is a theory. Thin prism. Thin prism is what? Huh? I know. Yes, sir. Okay. So, thin prism is what? Thin prism is a prism whose माथा खरा बोल माथा का एंगल छोटा है, that is A is less than equal to 5 degree. You may say A is less than equal to 5 degree. इतना कम एंगल है. That means this is not a thin prism because माथा का एंगल बहुत ज़्यादा है. तो thin prism कौन होगा? Thin prism would be a prism like this, which is having this A very small. This is called a thin prism. And when a ray of light passes through it, then what happens? Same thing happens as we did. So draw this with me. ड्रॉ करो. प्रिज्म का नाम दे दो ABC. And these are the same things. I1, R1. नाम दो. And inner angles, I have told you, inside angles are not to be taken as I. They need to be taken as R. So R2 and then I2. And the logic is, I understand you are getting something clumsy when you draw this. Why? चालाकी है इसमें. मैं रे को यहाँ पे ड्रॉ करता ना, ये I1 R1 तो फिर भी बढ़िया दिख लेता. बाकी when I would try to draw R2 and I2, ये यहाँ पे हो जाता clumsy as you are, some of you are facing the same problem. तो चालाकी क्या है? I didn't draw the ray diagram where the prism angle तो छोटा होगा ही होगा. You cannot make it broader the angle. Then नीचे आ जाओ, prism को लंबा बनाओ so that you get enough space at the bottom part to draw the angles. ये चालाकी है, सीख लो. चलो, giving you time, draw कर लो फटाफट. So if you have drawn this, अब क्या करना है? Simply let us, मैं तो तुम लोगों को बोला हूँ ऐसा theory है. Unless you apply that, no theory is complete. You cannot reach to the final answer. And that theory is Snell's law. So if the ray is PQRS, as we generally give the name PQRS, so finding or applying Snell's law at Q, Snell's law at Q, or on the surface AB, refraction on the surface AB, that gives us what? That gives us 1. That means here is nothing but air. Here is air. Mu of air is 1. So 1, general form of Snell's law, I have told you. 1, मैंने mu का value लिख दिया. Sin I1 equals to, prism का mu है. So on the other side, it would be mu sin R1. चलो equation 1 हो गया. Similarly, for refraction on AC, this was Snell's law for refraction on AB. Now for refraction on AC, see what will happen. Refraction on AC. Here's the Snell's law. Now this time it comes from the medium mu, this light. So mu sin R2 equals to 1, माने air sin, वहाँ पे angle कितना? I2. So this is second equation. Now the main idea, इसके नीचे लिखो.
मेन आइडिया हम लोग कर क्या रहे हैं, थिन प्रिज्म, तो कुछ तो खासियत होगा। द स्पेशलिटी फॉर अ थिन प्रिज्म इज, फॉर थिन प्रिज्म, मैं सोच के देखो थिन प्रिज्म के लिए ये मत लिखो, मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूं, A equals to R1 plus R2, do you remember? The best and smartest and छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला था, A equals to R1 plus R2, A, R1 and R2. They are related like this. So अगर A ही हो गया less than 5 डिग्री, इतना छोटा, that means on adding R1 and R2, you get 5 डिग्री or less than that. तो R1 R2 कितना छोटा होता सोचो, होना चाहिए। तो R1 R2 are very small. And as you know, Snell's law says that sine of I and R, इसका रेशियो कांस्टेंट होगा, मतलब R1 अगर छोटा हुआ तो I1 भी छोटा ही होगा, R2 अगर छोटा हुआ तो I2 भी छोटा ही होना है। दैट मीन्स लिखने मना किया, लेकिन सुनने के लिए मना नहीं किया, समझने के लिए मना नहीं किया। और वो क्या है कि फॉर थिन प्रिज्म I1, I2, R1, R2, these angles are very small. A equals to R1 plus R2, अब A खुद इतना छोटा है तो ये तो वेरी स्मॉल होगा ही होगा। तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 देखो, तो ये दोनों इक्वेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू साइन I1 बाय R1 एंड म्यू इक्वल्स टू साइन I2 बाय R2। देखो सेकेंड इक्वेशन से साइन कहां गया, साइन तो नहीं रहा, क्यों, वो तो प्यारे हो गए, किसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्यारे थे साइन, लेकिन यहां पे नहीं है। व्हाई, बिकॉज द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, दैट मीन्स I1 इक्वल्स टू म्यू R1 एंड I2 इक्वल्स टू म्यू R2। ठीक है, I1 I2 मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, क्या, डेविएशन डेल्टा ऑफ दिस रे। जनरल फॉर्मूला क्या सीखे थे, याद करके देखो, I1 प्लस I2 माइनस A, प्रूव किए थे इसका जनरल फॉर्मूला। I1 प्लस I2 को वहां से लिखेंगे म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस A, म्यू कॉमन R1 प्लस R2 माइनस A। फॉलो करो, डोंट जस्ट कॉपी इट, अंडरस्टैंड, फॉलो एंड यू राइट इट, आई एम गिविंग यू टाइम। लिखो देख के, डेल्टा इक्वल्स टू I1 प्लस I2 माइनस A नहीं सीखे थे, यस सीखे थे। So I1 and I2 can be replaced by these new findings that we have here, and those are I1 equals to mu R1, I2 equals to mu R2, just put them, mu R1 mu R2 and common ले लो mu, तो क्या होगा, बहुत ही एक अनकॉमन थिंग आएगा, क्या, R1 प्लस R2 अगर A बैठा दोगे तो क्या मिलेगा, देखो, if you put R1 and R2 to be A, then it gives you mu into A minus A। और आगे हाथ को फैला के लिख रहा हूं, म्यू, अच्छा A कॉमन लेता हूं, म्यू माइनस 1। सो अल्टीमेटली मिला क्या, लाइफ में बोल रहा हूं, यहां पे क्या मिला, देखो, वी गॉट डेल्टा, दैट इज डेविएशन फॉर अ थिन प्रिज्म is given by the angle of the prism, which is very small, into mu minus 1. This is the formula. कौन सा कलर से लिखा मैं फॉर्मूला को, देखो, येलो कलर से। Why? इसका कारण है येलो इज अब कॉल्ड मीन लाइट। तो क्या है मीन लाइट, तो whenever we write suffixes to the optical properties, like ये मैं बोला था तुम लोगों को याद रखने के लिए, म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आर, तो सफिक्स दिया ना मैं, वायलेट, रेड, यहां पे डेल्टा लिखा हूं, डेल्टा आर, डेल्टा भी, सफिक्स दिया ना, रेड, वायलेट, लेकिन येलो कलर बीइंग द मीन लाइट, उसको ये दर्जा मिला हुआ है, क्या,
उसका ऊपर आशीर्वाद है किसका? कन्वेंशन। दैट इज हम लोग मानते हैं कि वेन एवर वी रिप्रेजेंट एनीथिंग विदाउट एनी सफिक्स वी मीन इट विथ रेस्पेक्ट टू येलो कलर। सफिक्स नहीं है, येलो कलर का रेस्पेक्ट है। तो आज तक जो हम लोग ये लिखते आ रहे हैं कि प्रिज्म का आर आई म्यू, उसका माने इसका आर आई ऑफ द प्रिज्म विथ रेस्पेक्ट टू येलो कलर। तो हम लोग जो लिखते आ रहे थे डेविएशन डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस ए, इसमें दिस इज डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू येलो कलर। विथ रेस्पेक्ट टू मतलब क्या? येलो कलर को रेस्पेक्ट देते हुए, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू। सो कीप इन माइंड वेन एवर यू हैव यूज्ड और यू वुड बी यूजिंग characters in light without any suffix, you mean to write them with respect to yellow color anyway, but for other colors you need to provide it with suffixes. So now you understand how we got this thing. See, let us be back to the page. Sorry. Delta violet minus delta red, that means this part, that angle between the highest and lowest participant, that is red and violet, is called angle of dispersion, and that is given by delta violet minus delta red. So delta violet, now we understand this formula, that delta for any light would be given by A into refractive index with respect to that light minus 1. So with respect to violet light minus 1, with respect to red light minus 1, A common बाहर, तो A को common ले लिए and 1 cancelled. So this is mu violet minus mu red. This is the formula, and then comes the formula. I'm sticking to the main page because ये ज़्यादा पढ़ना नहीं है, because rainbow and dispersion of light through particles and water drops, ये दोनों syllabus से removed है. That's why we need not to go in much detail of this, लेकिन ये है syllabus में क्या? Dispersive power heading दो, dispersive power, उसका सिंबल क्या होता है? ये मेरा R है, हाँ, आज से देख के रखो, so that in future you don't have any problem. Dispersive power omega. Omega is called dispersive power of a prism. मतलब how much can it disperse? Disperse माने splitting of light into constituent colors. कौन सा light? Compound light, like white. So उसको बोलते हैं dispersion. तो जितना ये disperse ज़्यादा करेगा, एंगल ज़्यादा बनाएगा, more dispersive power, कम एंगल बनाएगा, less dispersive power. एक तो पिक्चर होना चाहिए ना, सेंस कि when we say this we see a picture. तो dispersive power ओमेगा प्रिज्म का कितना है देखो, ओमेगा would be given by ये जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन हुआ ना, एंगुलर डिस्पर्शन, कितना? फॉर्मूला ऐसे लिखो, डेल्टा वायलेट माइनस डेल्टा रेड डिवाइडेड बाय डेल्टा। अब ये बोल सकते हो नीचे डेल्टा क्यों लिख दिया, इसका सफिक्स कहाँ गया? क्योंकि येलो कलर से लिखा हो तो तीनों ही लिखा हूं स्टिल इट विल बी विथ रेस्पेक्ट टू येलो कलर, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सफिक्स. सो डेल्टा ऐसे लिख सकते हैं, yellow, delta yellow. Now if we put the values, we have already got delta violet minus delta red to be like this. देखो इसका प्रूफ में यही फर्स्ट लाइन है, मतलब फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, यही फर्स्ट है, ये सेकेंड पार्ट. नाउ सेकेंड पार्ट का ये वैल्यू, दिस वैल्यू वी आर गोइंग टू पुट हियर. सो लेट्स सी व्हाट कम्स एज ओमेगा. ये थर्ड पार्ट, omega equals to delta violet minus delta red, that means A into mu violet minus mu red divided by yellow color के लिए क्या होगा? A into only mu minus 1, no suffix, formula same but no suffix here, so A cancel and this is the formula. Omega equals to mu violet minus mu red divided by, यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला को, कहाँ पे? यहाँ पे ये नंबर 4 नंबर दे रहा हूं सो दैट यू डोंट फील इट क्लमजी. एक ही पेज में रहना, उसलिए आई एम राइटिंग हियर, हाँ सेम पेज. सो नंबर 4 फॉर्मूला को फिर से लिखता हूं, ओमेगा इज गिवन बाय, तुम लोग भी लिखो और उसको बॉक्स बनाना है, फॉर्मूला को साम आएगा इससे, म्यू वायलेट
minus mu red divided by mu minus 1 बना mu violet minus mu red divided by mu minus 1 सम बनाते चलो। तो लिखो फॉर अ प्रिज्म, प्रिज्म के लिए क्या करना है, हम लोग ये सम दे रहे हैं, डेल्टा नहीं लिखो म्यू विथ रेस्पेक्ट टू वायलेट लाइट 1.58, म्यू विथ रेस्पेक्ट टू रेड लाइट दिया हुआ वैल्यू, जस्ट कैलकुलेट करके बताओ, आंसर बताओ। फॉर रेड लाइट 1.52 हुआ। सो फाइंड angular dispersive power, find dispersive power if ना, if नहीं, यही निकालो, फाइंड डिस्पर्सिव पावर, फाइंड ओमेगा। ये फॉर्मूला कहाँ गया फॉर्मूला, ये बताओ डिस्पर्सिव पावर कितना, तो मैं लिख रहा हूं ओमेगा इक्वल्स टू आंसर पार्ट म्यू वायलेट माइनस म्यू रेड डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, तो म्यू वायलेट 1.58, म्यू रेड 1.52 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1। 1.5 क्यों लिखा, 1.5 तो इट्स नॉट अ गिवन डेटा, डेटा तो ये था, म्यू वॉज नॉट गिवन, तो म्यू क्या है, म्यू इज म्यू विथ रेस्पेक्ट टू येलो। येलो का बारे में कुछ मालूम है, येलो का बारे में, हाँ येलो इज अ गुड कलर, आई लाइक दिस, वो सब छोड़ के और क्या मालूम है, येलो इज मीन लाइट। अब मीन का माने समझो थोड़ा, मीन लाइट माने की यानी लिखने के लिए है क्या, फिजिक्स पढ़ रही है। मीन माने है म्यू वायलेट म्यू रेड 2 एवरेज, हाँ কত আসছে দেখি 1 পয়েন্ট 3.1 আসছে তো, হ্যাঁ তো 1.55 করো, 0.1 তারপর ও 0.109, তার মানে 0.11 করে দাও, ঠিক আছে, তাহলে ডিসপারসিভ পাওয়ার ইজ 0.11। ওকে, so this is a typical sum based on dispersive power. Otherwise, these are the theories that we did. Otherwise a formula लिखा ना हो तो this is not included in board. This is not included in board, but लिख के रखो जबकि context हो रहा है, लिख ले, इसको ना ऐसे लिखो, दो लेंसेज को एक साथ पेस्ट कर दिया, this lens has a focal length f1, this lens f2. For IISC this is included in boards, for IISC students, CBSC not included in boards, but for competitive exam it is there, competitive exam, तो थोड़ा सा सीख कर रखो। There are, ये फॉर्मूला तो जानते हैं हम लोग, दो इक्वेशन है, दो चीजें सॉल्व कर सकते हैं, या तो f1 f2 नहीं तो ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, देखो लेंस कैन बी इमेजिन्ड टू बी मेड अप ऑफ प्रिज्म्स, ये क्लास 9 10 जब भी सीखे थे
we did this. ये भी एक प्रिज्म है, ये भी एक प्रिज्म है. So there are small prisms and that make up the whole lens. We can understand this. So lenses also do have these dispersive power. So for the first lens, dispersive power is omega 1. For the second lens, dispersive power is omega 2. So if they maintain this relation, what? Omega 1 by f1 plus omega 2 by f2 equals to 0, then we call this combination of two lenses to be achromatic doublet. Double उससे doublet. तो achromatic doublet means there is a problem with lenses and prisms. That problem is called aberration. Aberration can be of two types. Just थोड़ा सा बता दे रहा हूँ. Aberration can be of two types. Chromatic aberration, that is for different colors, and another is spherical aberration for the spherical shape of this instruments, lenses. So these are called aberration. Aberration माने क्या? माने ऑब्जेक्ट एक जगह पे नहीं होगा. समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ. सपोज कि ये है कोई लेंस एंड सपोज यहाँ पे कोई ऐसा मूवी स्टार है जिनका ड्रेस है कलरफुल. कलरफुल माने ऑल द कलर्स कैन बी सीन ऑन हिज शर्ट एंड पैंट. तो ये कलरफुल ड्रेस से इफ वी एज्यूम दैट different rays are coming incident on a lens. मान लो sunlight है. So these rays are coming. Now out of these rays, suppose there are some rays which are red in nature. Say this one, say this one, say this one. So these are red colors. So what will happen? क्योंकि एक एक कलर का रिस्पेक्ट में अगर म्यू फिक्स है तो फोकल लेंथ भी फिक्स है. दैट मीन्स ऑल द रेज ऑफ लाइट व्हिच आर रेड will meet at this point. Like this. So we call this distance to be focal length for red, and maybe there are violet lights opposite of this. So all the violets may meet somewhere here. So this distance is called So all the other colors will meet in between these two points, violet और red का बीच में. तो सातों कलर एक जगह से निकला था. जो हीरो हम लोगों का ड्रेस पहना हुआ था सतरंगी. Now सातों कलर they do not meet at a point. That means they form images for different colors at different positions on the other side. चलिए हीरो का जो टोपी है वो यहाँ पे, शर्ट एक है, पैंट थोड़ा आगे हो गया इमेज उसका, तो हीरो कैसा दिखेगा सोचो. So that's why, I mean उतना भी नहीं होगा, but this is a problem. This is called chromatic aberration. Aberration due to chroma means color. और बाय द वे ये थोड़ा सा जान के रखो, पिक्चर को ड्रॉ करके रखो. ड्रॉ करके रखो. 4 पिक्चर दे दिया कि रेड कलर, सातों कलर यहां से गिरा, ऑल द कलर. सपोज यहां पे व्हाइट कलर लिखा हुआ है. अब तुम लोगों को ये 4 पिक्चर 4 अलग अलग दिखा गया. रेड पहले मिट कर गया, वायलेट बाद में, वायलेट बीच में आ गया, रेड इधर, इधर ग्रीन. तो विच वन इज करेक्ट हो सकता है ना, डिस्पर्शन रिलेटेड. चलो ठीक है. तो इफ यू आर यूजिंग 2 लेंसेस जिसमें ये डिस्पर्शन ड्यू टू मैंने एबरेशन ड्यू टू कलर दैट इज क्रोमा नहीं होगा, तो उसका कंडीशन ये है. इफ यू कैन सेलेक्ट 2 लेंसेस जिसका इक्वेशन 2 देखो तो एक बार इक्वेशन 2 तो फर्स्ट फोकस करो. फोकस ऑन इक्वेशन 2. क्या फोकस करूं, फोकस क्या करूं, ऐसे तो देख रहा था और ऐसे करके देखूं क्या, इसको फोकस नहीं बोलते हैं. फोकस बोल जाए एनालाइज करो. आई मीन टू से दैट इज
इफ F1 और F2 दोनों ही प्लस है या तो दोनों ही माइनस है, तब यहां पे 0 आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज ओमेगा कैन नॉट बी नेगेटिव। देख तो लिया यहां पे ओमेगा का फॉर्मूला, नेगेटिव आ सकता है क्या ओमेगा? दिस इज ग्रेटर एंड दिस इज लेस, सो ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ताहले म्यू माइनस 1 ऑलवेज प्लस आएगा। दैट मीन्स ओमेगा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो नेगेटिव किसको होना चाहिए? या तो F1 नहीं तो F2। तो अगर F1 प्लस F2 माइनस, F2 प्लस F1 माइनस, दैट मीन्स व्हाट? अगर एक कन्वेक्स लेंस हुआ देन द अदर मस्ट बी कनकेव। ये assertion रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में आता है। देखो, I have pasted one convex lens with another concave lens. That's why they are called achromatic doublet. मान लो ये फॉर्मूला आया नहीं, साम आया नहीं, ये पूछ लिया कि achromatic doublet के लिए there must be two convex, two concave, one convex, one concave, any lenses put together. तो one convex, one concave at least होना चाहिए। तो यहाँ से अगर साम आएगा for IISc students एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स, अगर साम आएगा क्या करेंगे? देखो इक्वेशन 1 से F1 F2 का एक रिलेशन मिल जाएगा विथ कैपिटल F। कैपिटल F माने नेट फोकल लेंथ, मे बी दिस इज गिवन। तो F1 F2 अननोन, दीज आर गिवन। तो F1 F2 अननोन, तो कितना अननोन हुआ? 2। F1 एंड F2 इक्वेशंस कितने हैं? 2। यू कैन इजिली सॉल्व दैम। सो this is a source, and suppose some waves are generated from this. Now, phase difference between 2 points are 2 pi by lambda into x. Lambda, wavelength of all the waves are same because the source is same. Then delta x, if delta x is same, we can find points on these waves with same phase, like this point, this point, this point and this point will be at same phase. Why? Because these are at a distance, how much? A distance to কত হবে? This distance would be lambda by 4. If you remember these ideas, you need to remember these ideas. This total wavelength is called lambda. So one loop only is lambda by 2 and half of the loop, that is called lambda by 4. So this is representing half of the loop. So इसका फेज डिफरेंस, शुरू का पॉइंट से फेज डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट विल बी 2 pi by lambda into lambda by 4. That means how much? Pi by 2, 90 degree. Anyway, so like this. Sphere. Sphere. Because we are thinking in 3D. But here if we draw this, it would be a circle. Why? Because in 3D it would be sphere, in 2D it is a circle. Why circle? Because the distance of these points from the source have been the same. समझ में नहीं आ रहा ये same कैसे हो गया? Because if I'm telling you, if the distance is same, wavelength तो same है ही, 2 pi तो constant, then we can say that the points are at same phase. When the distances from the source is same. ये कैसे हो सकता है? I'm drawing this here also. ये पेज तो rough पेज है, starting page. I'm drawing it here. Suppose this is a source. Now this wave has moved a distance in times t. How much? Ct. Ct is what? Ct मतलब speed of light is c. Speed of light is c, and time taken or time the time that has elapsed, that is t. So in t seconds, how much will light go? Ct in this direction, Ct in this direction, Ct in this direction. Every direction it would be moving Ct. So the path traveled Ct same हो गया delta x Ct, lambda same, 2 pi constant, so phase difference same होगा सब में से. So if you now draw a line, or you can say a surface touching all these points, then you get a sphere. Now after or another t seconds, the light will go to Ct, because another t. So S is equal to Vt.
c into 2t. So all these lights at a distance 2ct will again be on another sphere or circle. Circle ही सोचो ऐसे 2ct. So like this, if there is a source of light, it from the source as a 3D में the wave fronts are spreading like this. This sphere is called wave front. Wave का front after a time 2t. This was also the wave front after a time t, and there would be another wave front like this after a time 3t, after a time 4t, like this. But ऐसा कितना draw करो? So that's why we do not draw this whole sphere, rather we show this part only, just to show that there is the part of the sphere here, there is the complete sphere just beside this or behind this. Actually a गोल sphere का part है. So we from now on assume that light moves from a source S in this form. ओए कहाँ जा रहा है? In this form, like this. Actually it is spreading in larger sphere in the form of waves, and these would be spherical wave fronts. The front of that wave till what it has reached finally after a certain time is called the front of that wave. That is wave front. So these are wave fronts, and there are certain characteristics of wave front. How they are characterized? Or how should a wave front look like? What property should it maintain? I have made a detailed video on these things. Detailed and very clean and clear without disturbance videos are there. I'll send them. But I want to do something together with you so that you have a practice. That's why I have started this. Let us do the practice. Only seeing the videos, it is better if we practice together and then see the videos ki okay, these were the briefs. Okay. So practice is one idea I would tell you to remember, that is when these wave fronts are spreading, this gap between two consecutive wave fronts, consecutive, पहला, fifth, ninth, ऐसा नहीं, एक का बाद एक, just immediate next, उसको बोलते हैं consecutive. So distance between two consecutive wave fronts is lambda. यहाँ पे तो lambda का बाप हो गया ये. तो let me erase this. erase को. Disturbance যদি চেঞ্জ করো, ফ্রিকোয়েন্সি যদি চেঞ্জ করে দাও, ফ্রিকোয়েন্সি মানে হচ্ছে সাপোজ একটা ওয়াটার সারফেস বানালে ট্যাঙ্ক, অ্যান্ড দেন ইউ টুক আ ভাইব্রেটরি instrument that can vibrate, ওখানে মোটর লাগিয়ে দিয়েছো. Now if you switch it on, the motor rotates and it disturbs the water surface like this, এমনি করে. So there are ripples created and spread. These are wave fronts spreading up. Now if you change the frequency very fast, ya to slow. Now the nature of the wave fronts, that will change if the frequency changes. Because দেখো এই ফর্মুলাটা কি বলছে, if you change the frequency, কি বললাম এখন, if you change the frequency fast, slow, accordingly lambda will change. Why? Because speed of light in vacuum or any medium, if it is a certain medium, it is constant. বুঝতে পেরেছো মানেটা? তাহলে চেষ্টা করবো আমরা ফর্মুলা থেকে আনসার বার করতে. চলো, তো লাইক দিস লাইট উইল স্প্রেড ইন ফরওয়ার্ড ডাইরেকশন. দুটো প্রপার্টি আমি বলবো অ্যাটলিস্ট মনে রাখো প্লিজ, দুটো প্রপার্টি. একটা হচ্ছে যে কনজিকিউটিভ ডিস্টেন্সগুলো ল্যামডা হয়, না তিনটে প্রপার্টি, তাহলে ওটা যখন বলে দিয়েছি. সেকেন্ড প্রপার্টি ইজ রেজ অফ লাইট are always perpendicular to the wave fronts. That is the relation. ये याद रखो बस. इसके लिए आज का क्लास अगर सिर्फ इसके लिए है ना, तो be it.
rays of, because this is the basic of all the proofs and formulas that we are going to make in future. Rays of light are perpendicular to wave fronts at any point. At any point. कहीं पे भी ray of light draw कर लिए तो wave front कैसा होगा? Perpendicular to that. या तो wave front we know, and how would be the ray of light? समझ में नहीं आ रहा है? Perpendicular draw कर दो उस point का साथ. अगर वो curve है तो उसका tangent का साथ. That will give you the ray of light. The relation between ray of light and wave front. Second property बोल दिए. एक तो lambda, second perpendicular. Third property, ray of light or wave front. Draw करो ना, draw करो ना. I'm telling you, because नहीं तो lagging behind हो जाएगा. लिखे ना, draw करो. একটা অন্তত পিকচার ড্র করো. थर्ड प्रॉपर्टी इज कि अगर इफ देयर आर सम रेज ऑफ लाइट दे हैव रीच्ड अप टू दिस वेव फ्रंट, अब थोड़ा देर बाद ये लाइट आ गया यहां तक अप टू द सेकेंड वेव फ्रंट और थर्ड वेव फ्रंट. ये लाइट अभी भी रास्ते में है, ये लाइट थोड़ा फास्ट निकला था लेकिन अभी भी पहुंच नहीं पाया. ये तो जस्ट हैज स्टार्टेड. ये पिक्चर रॉन्ग है. ये सेकेंड थर्ड प्रॉपर्टी है. इट कैनॉट हैपन. माने यहां पे ना डेमोक्रेसी चलता है. दैट मीन्स कानून सबके लिए सेम है. दैट मीन्स ऑल द रेज विल रीच अ सर्टेन वेव फ्रंट एट अ सर्टेन टाइम. अगर कोई वेव फ्रंट लाइक सपोज वी एज्यूम दैट दिस हैज ऑलरेडी रीच्ड हियर, माने इसका ऐसा हो गया कि क्लास 12 में पढ़ा रहा है सब, किसी का जॉइंट हो गया, किसी का आईआईटी बन गया, किसी का बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं, किसी का होगा भी नहीं. ऐसे तो हो नहीं सकता ना. एवरीवन विल बी अपीयरिंग फॉर अ सर्टेन एग्जाम ऑन अ सर्टेन डेट. मैं नीट का बात बोल रहा हूँ बिकॉज मेंस ना नीट. या तो सपोज बोर्ड एग्जाम फिजिक्स फॉर अ सर्टेन curriculum like CBSE or IISC or West Bengal Board, fixed date. Similarly, all the students will come to a fixed date. Similarly, all the rays of light will reach a certain wave front at a certain time. अगर मान लो ये फिर से next time पे यहाँ पे आया next wave front, तो all the rays of light will come together at the same time to the next wave front. कोई lagging नहीं रहेगा. रेज में बोल रहा हूँ, सारे रेज एक साथ वन वेव फ्रंट टू अनदर वेव फ्रंट ट्रैवल करेगा. ये बहुत ही एलिमेंटरी एक आइडिया है, इसको जान के रखो. और ये तो समझ ही रहे हो दैट व्हेन दीज वेव फ्रंट्स मूव वेरी फास्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस, तो ये लास्ट में फ्लैट हो जाएगा. फ्लैट. व्हाई? बिकॉज इफ दिस डिस्टेंस is up to infinity, so it would be a spherical wave front of infinitely large radius. तो उसका एक छोटा सा पार्ट कैसा हो जाएगा? फ्लैट. So wave fronts become flat when the waves have traveled a large distance. और 2D में ये देखने में कैसा होगा? फ्लैट तो लाइन बोल दिया. 3D 2D में कैसा होगा? ऐसा. So wave fronts, इसका अगला wave front it would be like this. तो अब से ऐसा सोचो कि लाइट का सोर्स दैट इज एमिटिंग वेव्स, ये वेव का फ्रंट ये है, अब ये है, ऐसे करते करते वेव विल ट्रैवल एंड नॉट की रेज ऑफ लाइट दैट ट्रैवल्स. ऐसा नहीं होता है एक्चुअली दिस इज ट्रू. और जो पहले करके आए वो अनट्रू नहीं है. प्रैक्टिकल फैक्ट विल हैपन, but that is true within a certain distance only, and that distance is called Fresnel's distance.
फ्रेसनेल्स डिस्टेंस तक रे ऑप्टिक्स इज वैलिड। उसका बाहर रेड ऑप्टिक्स वैलिड नहीं होगा, ओनली वेव ऑप्टिक्स वैलिड। ठीक है, सो विद दिस कंसेप्ट मैं ये बोल रहा हूं, लेट मी टेल यू दोज थिंग्स और लेट अस प्रैक्टिस दोज थिंग्स जो कि यू शुड प्रैक्टिस। और सिर्फ इंफॉर्मेटिव उसके लिए तो आई हैव मेड दोज डेडिकेटेड वीडियोज फॉर यू, तो आई विल सेंड यू दोज थिंग्स। चलो এবার শেখার জিনিসগুলো করি। মানে হচ্ছে শেখার জিনিসগুলো মানে হচ্ছে হাইজেন্স প্রিন্সিপাল, যেমন একটা নিউ কনসেপ্ট হাইজেন্স প্রিন্সিপাল। এই প্রিন্সিপাল क्या है, इट चेंज्ड अ लॉट्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियोरम थियोरी टू दिस मॉडर्न हाइजेनो सब एक्सप्लेन करते पारेनी, वी टुक हेल्प ऑफ अदर थियोरम्स, बट अप टू दैट हाइजेंस थियोरी इज ओके। सो हाइजेंस प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड, वो क्या है, सिंपल माने समझा दे रहा हूँ। दिस इज, अच्छा उससे पहले हाइजेंस प्रिंसिपल में बिफोर वी गो देयर लेट अस लर्न अनदर टर्म दैट इज two sources are said to be coherent if phase difference between the waves is constant। अब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। दिस शुड बी कॉन्स्टेंट for two waves, then we say that the sources are coherent। coherent कौन होते हैं, sources। suppose two sources are there, S1 टॉर्च, S2 मोबाइल का टॉर्च। अब ये दोनों से ऐसे वेव्स निकल रहे हैं, वेव्स, इसका वेवलेंथ लैम्डा, इसका भी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी n, इसका भी n, स्पीड c, इसका भी c, सब सेम है, एवरीथिंग इज सेम। देन तब भी ये दोनों को कोहेरेंट नहीं भी बोल सकते, बट कोहेरेंट तब बोलेंगे इफ द डिलीवरी ऑफ दिस वेव्स, माने क्या है कि फेज डिफरेंस माने यू अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ वेव्स, तो थोड़ा सा ऐसे करके देखो पिक्चर, दिस प्रोड्यूसेस अ वेव लाइक दिस इज से S1 सोर्स एंड दिस इज S2 सोर्स। S2 source hasn't yet produced any wave। वो अभी भी बैठा है कि इसको करने दो, ये तो क्लास 9-10 से IIT का प्रिपरेशन लेना शुरू कर दिया, S2 सोर्स अभी वेट कर रहा है। तो S2 सोर्स क्या किया, इट स्टार्टेड बट अ लिटिल लेट, अब से शुरू किया ये, तो तब तो ये भी आगे बढ़ जाएगा। इसका 2 लूप बन गया, इसका भी तो 2 लूप बन गया, इसका अगर और एक लूप बन गया, इसका भी तो और एक लूप बन जाएगा। तो कैन वी से दैट फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू लूप्स इज कॉन्स्टेंट। এটা বুঝতে পারছো যে इतना तक ही आगे बढ़ चुका है, তাহলে this much of phase it has already made before the second source started delivering waves। so what happens now after the second source started, तब तो फर्स्ट सोर्स का छोड़ा हुआ वेव और आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, बट these two waves will be maintaining a constant phase difference of these many waves that already had started before it starts, so they would be at constant phase difference now। so we can say these two sources to be coherent, but one condition is there। S2 जब स्टार्ट किया था तब और एक वेव स्टार्ट किया S3, S3 भी स्टार्ट किया, बोला मुझे भी IIT देना है,
लेकिन S3 ऐसा है, वेवलेंथ मैच नहीं कर रहा है IIT का साथ। IIT देने के लिए वेवलेंथ होना चाहिए, तो कुछ फॉर्म तो फिलअप कर सकते हो। दैट मीन्स the wavelength of this and this or this is not matching, so S3 cannot be coherent with these two। क्यों? मेन कंडीशन ही फेल कर रहा है। क्या कंडीशन था? मेन कंडीशन था कि दे हैव टू हैव इक्वल वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। याद करो। सो दोनों सोर्सेस का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होना चाहिए। इसका वेवलेंथ देख के पता चल रहा है कि दोनों से अलग है, ये लंबा है, ज्यादा वेवलेंथ है। सो दिस इज नॉट कोहेरेंट विथ S1 और S2। तो विजुअल आइडिया होना चाहिए, तब जाके ये सब याद रख पाओगे। यू कैन रिमेंबर देम। दैट्स व्हाई दिस क्लास टुडेज जस्ट आई एम पॉइंटिंग आउट टू दोज थिंग्स। ठीक है, देन देयर कम्स द वीडियो हैविंग एवरीथिंग only for your exam. That is an exam specific video. This is knowledge specific. How it happens, you can ask me questions, I'll clear the doubts. So these three में से ये दोनों हाँ कोहेरेंट है। अगेन अगर ऐसा हो गया कि S1 नाम का एक सोर्स और S2 नाम का एक सोर्स, ওটাকে একটু ইগনোর করো, মানে উই ইন্টেন্ড টু মেক দেম অফ সেম ল্যামডা, এটা ধরে নাও। হ্যাঁ, আমরা লিখে দিচ্ছি, ধরো এটাকে লিখছি ল্যামডা নট, এটাও ল্যামডা নট। কিন্তু যদি ল্যামডাটাই সেম না হয়, হ্যাঁ বলো, কোহেরেন্ট, ইয়েস। কেন কোহেরেন্ট আবার বলছি শোনো। মেবি যে S1 has already made a phase of to this, দেখবে কত ফেজ বানিয়েছে, ক্যান উই ক্যালকুলেট? ইয়েস, ক্লাস 12 স্টুডেন্ট ফিজিক্স। ওহো, দেখবে, দেখো ये फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। তাহলে S1 এর ফেজ আপ টু দিস, when it moved already up to this, how much would be that? 2 pi by lambda into, do you remember this thing? One loop মানে length কত? lambda by 2. One loop means lambda by 2. তাহলে how many loops are there? 1 2 3 4 5 6. 6 loops already made. So 6 loops মানে 6 into lambda by 2, that is the path difference. So how much is that? लैम्डा लैम्डा तो कैंसिल, ये कितना हो गया? 6 पाई। 6 पाई फेज डिफरेंस इसका साथ इसका। सो अब ये सेकेंड वाला स्टार्ट किया। सो अब आगे जो टाइम होता रहेगा, बोथ वेव्स विल बी कंटिन्यूइंग मूविंग, बट ये दोनों का 6 पाई फेज डिफरेंस ऑलवेज विल बी मेंटेन्ड and it will not change with respect to time। তাহলে यहाँ पे और एक टर्म लिख दो। हाँ, এটাতে হ্যাঁ সেটা থাকবে, বাট ডিস্ট্রাকটিভ কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স হবে যে when you consider two waves যারা একসঙ্গে একটার উপর আরেকটা পড়ে গেছে। আমরা এখন ইমাজিন করছি যে এই দুটো না একটা যে কোনো, হ্যাঁ সেটাই বলছি যে যখন দুটো ওয়েভ সেপারেটলি থাকবে, ইন্ডিভিজুয়ালি এক্সিস্ট করছে, তখন আমরা এটা ভাবছি যে সোর্সগুলো কোহেরেন্ট কিনা। এবার সোর্স কোহেরেন্ট হওয়ার মানে দে আর জাস্ট প্রডিউসিং দেম উইথ কনস্ট্যান্ট ফেজ। এরপরে যে ওয়েভটা তৈরি হলো তারা ইন্টারফেয়ার করবে নাকি ডিসপারশন মানে ডিফ্র্যাকশন করবে নাকি পোলারাইজেশন হবে, সেটা ডাজন্ট ম্যাটার, বুঝছো? সেটা ডিপেন্ডস অন দ্য অপটিক্যাল ফেনোমেনা। কিন্তু তুমি যেটা বলছো যে যদি এই দুজন ইন্টারফারেন্স করে, মানে একটার পজিটিভ আর একটা নেগেটিভের সঙ্গে মিলে যায়, তাহলে ওরা একদম পারফেক্টলি অ্যালাইনড হবে। ইয়েস, দ্যাট ইজ রাইট, দ্যাট ইজ রাইট, একদম পারফেক্টলি অ্যালাইনড। কেন? ল্যামডা সেম, তাহলে তো ওয়েভ ফর্মটাও সেম। ওয়েভ ফর্ম মানে আপ ডাউনের এইটা, অ্যাম্পলিটিউড সেম, অ্যাম্পলিটিউড সেম, বাট
একটা জিনিস বলছি, উই আর মুভিং দেয়ার, এইটাতে বেশি থাকলে তার থেকে আমরা থিওরিতে যাই। চলো, লেট আস লার্ন দেম অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। সো ইফ ইউ আর আস্ক হোয়াট আর কোহেরেন্ট সোর্সেস, সো কোহেরেন্ট সোর্সেস আর দ্য সোর্সেস ফ্রম হুইচ বা ফর হুইচ the waves generated from them maintains a constant क्या phi माने phase difference between them with respect to time। মনে থাকবে, এটা মনে করে নাও যে এখনই পড়ে নিলাম, ব্যাস ঠিক আছে, এই তো এক্সামের আগে না দেখলেও চলবে। আই ক্যান রিমেম্বার phase coherent sources are the sources from which বা for which the emitted waves, যে ওয়েভসগুলো এমিট করছে, waves have same phase difference with respect to time. That means phase difference does not change with respect to time. ওই দুটো সোর্সকে বলবো, or those sources are called coherent sources. ঠিক আছে, এটা একটু হলো। নেক্সট হচ্ছে যে হাইজেন্স প্রিন্সিপাল। Huygens principle এর মানেটা দেখো। Huygens principle says that whenever a source ऐसे करते करते it is delivering those wave fronts এমনি করে। So if there is a wave front here and if we do not draw this, we are considering a wave front at a certain time, then Huygens says this is a wave frontal. Then Huygens says what? If you draw with me, then it will help you. Draw. Huygens says what? Any point and then write with me. Any point on a wave front, on a wave front, yes, this is a wave front and this is a point. So any point on a wave front, this acts as, it will act as a fresh source of disturbance, acts as a fresh source of disturbance. Water, you throw a stone, that creates ripples on the water surface. Similarly, this is a disturbance that had caused this wave to flow or move. Then the last wave front that we are having now is this one, and if we consider any point on a wave front, this point will act as a fresh source just like this. बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो दिस इज ऑल्सो अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। एंड ये फिर करेगा क्या? ये फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस करेगा क्या? फिर छोटे मियाँ भी वही करतूते दिखाएंगे। दैट मीन्स दिस एक्ट्स एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम व्हिच, फ्रॉम इट secondary wavelets will be produced. हो गया, हाइजेंस प्रिंसिपल हो गया। माने समझ लो, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज। थोड़ा सा बुक्स पढ़ लेना, मैं जो बुक दिया हूँ वो हो, चाहे बुक हो, एनी टेक्स्ट बुक, कुछ भी पढ़ लो, एक ही लिखा हुआ है 3-4 पॉइंट करके, बाकी आइडिया यही है। पिक्चर, आइडिया, एरो 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 देके खुद से लिखो, अभी के अभी लिखो इसको। 90% तो यहीं पे हो जाएगा अभी। सो आइडिया इज दिस, इफ यू ड्रॉ any point on a wave front, then that point acts as a fresh source of disturbance
तो सोर्स माने कि इट विल अगेन रिलीज न्यू वेव फ्रंट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलेंगे उसको. वेव मीन्स बिग वेव, वेवलेट स्मॉलर, लीफ लीफलेट, 8 लगा देंगे छोटा हो जाएगा. दैट मीन्स सेकेंडरी वेवलेट्स आर प्रोड्यूस, मतलब दिस विल अगेन रिलीज. सर्कल तो हो नहीं रहा है, तुम तो जानते हो. आई कैनॉट ड्रॉ गुड सर्कल्स एनीवे, तो इसको गुड सर्कल मान के समझ लो, ये स्फीयर एक्चुअली. So this point will act as a fresh source of disturbance and it will generate further wave fronts, wave fronts, wave fronts. अब इससे निकलना शुरू हो जाएगा ऐसे. We can imagine like this. Huygens says this. Hey, what if we consider another point here? So after a time t, if this light actually moves a distance and we join them by this wave front. So wave front is a locus of all the points on a wave having same phase. क्या बोला मैं? Wave front. लिखो लिखो. The more you write, higher are the chances you retain, you understand. So wave front is the locus of all the points on a wave having, क्या बोला था? Having chocolate ना आइसक्रीम, क्या बोले? चॉकलेट आइसक्रीम नहीं, having same wave, same phase. Having same phase. Phase same है, हाथ उठाओ, सबका हाथ उठा लिया, सबका हाथ को बांध दिया ऐसे कि ये सब ना मेरे सेम फेज वाले हाथ है. That means just like that, if it is a story like that. And I told you that story on the very first page, how it happened. कहाँ गया? यहाँ पे. Same phase वाला point तो ये भी होंगे. तो if you join them, तो this sphere 3D ऐसे करके सोचो. So that will be the next wave front. ऐसे करके wave front होते हैं. So if you find another point, t second बाद इससे भी light जाएगा ct in all the directions. So there would be another wave front like this from another point. ठीक, ये पेज में इतना रहने देते हैं. अब ना मेरे साथ ड्रॉ करो तो हाथ से ही, हाथ से एज ए नॉर्मल, माने आई मीन विदाउट एनी कॉम्पस, पैर से नहीं बोल रहा हूँ, हाथ से करो माने विदाउट कॉम्पस ऐसे ड्रॉ करो. दिस इज अ सोर्सेस, दिस इज अ वेव फ्रंट, नाम दे दो ए बी. फटाफट 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से, और 3 मार्क्स है इसमें. नाउ कंसिडर दिस 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 एनीवेयर. 3-4 पॉइंट ले लो. अच्छा, ये 3-4 जो पॉइंट ड्रॉ किया हूं मैं, हु सेज व्हाट शुड बी द नेम्स ऑफ दिस पॉइंट्स? ये 3-4 पॉइंट्स में ले लिया ऑन अ वेव फ्रंट ए बी. अच्छा, हाँ, very good, you are getting this, very good. And this is that picture. This would be a secondary source, not primary, not main. Any point on a wave front acts as a fresh source of disturbance. You can say that also, fresh source of disturbance, या तो secondary source जैसा काम करेगा. They will release further wave fronts. So let us draw. Same radius है ना, same radius, because after a time t light has gone ct, 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 so their radii would be ct. Same radius का 3-4 sphere draw कर लो, माने circle, and then you may join them. Oh my goodness, wow. You would not say, let me tell you myself, A dash B dash. A dash B dash is the new wave front, और ये भी तो होगा. अरे इसके लिए डॉटेड क्यों? Because it doesn't exist. Why? Huygens said this.
Huygens discarded the existence of इसे बोलते हैं बैकवर्ड वेव फ्रंट. कौन सा? ए डबल डैश बी डबल डैश. तो आज का न्यू हीरो कौन है? न्यू वेव फ्रंट. That is next wave front. AB dash dash. A dash B dash is the next wave front after AB had happened or took place. फिर we can similarly find anywhere these points as secondary sources of disturbance, and they would again produce these things, and again there would be next like this. That is the process, how we get the secondary wavelets. And this is the picture. 2 marks to 3 marks theory. State Huygens principle. Show how next wave front can be found from an existing wave front. ये लिख के आ जाना, ये पिक्चर ड्रॉ करके आ जाना, खत्म. तो that is Huygens principle. Now you will be doing only drawings will be done. Drawing को किसका ना? Applying Huygens principle, the most important question from this part chapter पूरा नहीं बोलो, this part क्या? Applying Huygens principle, proof of reflection or proof of refraction. তোমাদের যে এক্সাম হলো, যাদের লাইট ছিল, এসছিল কারুর হাইজেন্স প্রিন্সিপাল থেকে রিফ্লেকশন বা রিফ্র্যাকশন? যদি না এসে থাকে, এসছিল কোনটা? এসছিল কোনটা? দুটোই এসছিল, অর দিয়ে লেখা ছিল যে রিফ্লেকশন। গুড ভালো কোশ্চেন ওটা, কেননা দ্যাট ইজ এ গুড কোশ্চেন, ওটা কমন পাবে। তো আমার সঙ্গে না শুধু পিকচারটা ড্র করো একসঙ্গে, তাহলে এভরি ডিটেল, কোথাও যদি ডাউট থাকে যে স্যার ইয়ে কিউ হুয়া ও কিউ হুয়া, আল ক্লিয়ার ইট। হ্যাঁ, বাকি everything is given in that video as a separate dedicated video on Huygens principle only. I'll be giving you why I'm talking about those videos, because I have tried my best to use animations. मजा आएगा। तो चलो draw करो surface. Let me show you some techniques. Technique is everything. हाँ no. টেকনিক ইজ এভরিথিং। তোমাদের তো স্টোরিটা বলেছি, যেটা আমিও শিখেছিলাম জানো তো। নিজেকে বিরাট ভাবতে শুরু করতাম, তো মানে যখন জয়েন্টের রেজাল্ট বেরোলো বিরাট ভাবতে শুরু হলো, ভাই কুছ কর দিয়া ভাই, মেডিকেল মে র্যাঙ্ক, ইঞ্জিনিয়ারিং মে র্যাঙ্ক উইদিন 100 ওফ। তারপরে যখন when I went to college and saw those genius people, genius professors, তখন মনে হলো তো मैं तो एक डॉट हूँ जस्ट। আর অমনি হয়েছিল আফটার গেটিং আ জব, বুঝলে, বেড়াতে গেছি, তো ওখানে গিয়ে দেখছি যে মানে তখন তো অ্যাবাভ দ্য ওয়ার্ল্ড, ইউ গট আ জব। তো তাও সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, তখনকার দিনে অনেক ভ্যালু থাকতো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জব, এখনও আছে। তো যাই হোক, তো ওখানে বেড়াতে গেছি, তো দেখছি রাস্তার ধারে চায় দোকান। আমি বলেছি মেবি স্টোরিটা তোমাদের। ওখানে লিন পারসন জাস্ট লাইক মি was hammering those mountain stones, এত বড় বড় চাঙ্ক, একবার মারছে 4-5 ফ্র্যাগমেন্টস, টুকরো। তো চা দোকান সাইডে এরকম হিল, আমি নেমে ভাবছি যে এ পারছে, তাহলে লেট মি ট্রাই আউট মাই হ্যান্ডস। তো আমার ভাইও ছিল, মানে আমার কাজিন, তো ওর চেহারা কিন্তু এমনি। তো যাই হোক, আমি গেলাম, হাতুড়িটা নিলাম, তুলতে গিয়ে দেখছি যে পড়েই যাবো পেছন দিকে, এত ভারী হাতুড়িটা। তো পারলাম না, হিট করলাম, হাতেই লাগলো, ঝনঝন করে গেল একদম হাতটা। তখন ওই লোকটা আমায় বলেছিল যে সাহাব, হর চিজ কা টেকনিক হতা হ্যায়। আর টেকনিক কথাটা বলেনি, বাট হি মেন্ট টু সে দ্যাট, যে হাউ টু হিট, ওয়্যার টু হিট, ইউ হ্যাভ টু নো দ্যাট।
and then he showed me how he is hitting those chunks of stones and crushing them nearly. So then I realized कि lots of things to learn from these people. Everyone applies this technique. So technique gulo shekho. Technique is this. This is a reflecting surface. Reflecting. তেরা আয়নার মতো এমনি শেড দিতেও পারো নাও দিতে পারো ইউ মে রাইট দ্যাট দিস ইজ আ রিফ্লেক্টিং সারফেস ঠিক নাও উই উইল বি ড্রয়িং রেজ অফ লাইট টেকনোলজি আজা ভাই কালার চেঞ্জ কালার কি নেবো একটু ভালো একটা কালার এমনি নিচ্ছি দেখো ইফ ইউ টেক দিস রে and this ray मैं बता रहा हूँ क्या होगा these are two incident rays এখন draw করো না don't draw first let us learn from problems then we will draw this then this will be a normal this will be a normal and then they will reflect like this মোটামুটি angle of incidence equals to angle of reflection মোটামুটি angle of incidence equals to angle of reflection ये दोनों हो गया. Now these are the reflected rays. Now we will be drawing color change করছি we will be drawing wave fronts. Actually rays are not coming. We will assume that wave fronts will be coming. And how to draw a wave front? Wave front would be perpendicular to the rays of light. I told you one feature that you need to remember. So this wave front actually is coming like this, like this, like this. ये wave front आ रहा है ऐसे. So rays are not coming. ऐसे सोचो कि wave front आ रहा है ऐसे, 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 like this, and it hits here. और अगर ये hit करेगा ऐसे, suppose if this is the wave front आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसे hit किया इसको, तो यहाँ पे जैसे hit करेगा, it will turn. This wave front will turn. ये wave front ऐसे. तो ये पेन अगर आके ऐसे हिट करेगा ये सरफेस को तो पेन टर्न हो जाएगा ना ऐसे तो इट विल टर्न लाइक दिस और न्यू वेव फ्रंट विल बी पैरेलल टू दिस ऐसे दैट मीन्स दीज रेज वुड अगेन बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट्स सो ऐसे वेव फ्रंट्स निकल रहा है सो ऐसे आया धक्का लगा टर्न हो गया ऐसे ढिच के आऊं एंड देन ऐसे. And now every time these wave fronts का साथ perpendicular कौन होंगे? Rays of light. So this is it. Concept part बना. अरे क्या हो रहा? Next. Concept part का बाद. Next is we will not draw these many wave fronts. देखो तो how clumsy it becomes. So we will be drawing a single wave front that is perpendicular to this. किसका साथ परपेंडिकुलर इंसिडेंट रेज का साथ तो वो तो ऐसा था यहाँ पे तो उसको टान के लेके आके यहाँ से ड्रॉ करो ए बी से डोंट ड्रॉ दिस आई एम टेलिंग यू ड्रॉ करो ना तो ये आके लास्ट कब गिरा था যেমন as we say incident rays we can say and we say incident wave front as if the wave front is incident on the surface so this is the last incident wave front why because after this it's turned एक बार टच कर लिया सरफेस को वही लास्ट है एंड देन इट टर्न्स एंड व्हेन इट टर्न्स इट अगेन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द रेज ऑफ लाइट ये दोनों का साथ परपेंडिकुलर बी पॉइंट से ड्रॉ करेंगे ऐसे दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टेड रे दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज का साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए. अब देखो कितना कंफ्यूजिंग clumsy picture बना जिसमें we have to find triangles. ये है problem. So unless if I say this only, words cannot describe this problem of students. How problematic it is. So कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे ऐसे करेंगे तो टेक्निक क्या है इसका टेक्निक इज पूरा चीज को हटा दो and then the technique is suppose if this is the surface we will draw देखो टेक्निक देखो we will draw rays of light ऐसे नहीं
मतलब ऐसे नहीं कि एंगल इज लेस, हम लोग इसको सुला के ड्रॉ करेंगे, शुइए दे बेटा। कैसे? फर्स्ट रे ही ड्रॉ करना ऐसे, एकदम सुला के ड्रॉ करना, सो दैट ये करीब करीब सो गया ऐसे, एंड सेकेंड रे पैरेलल टू दैट ऐसे। पैरेलल टू दैट, ये ऐसे रेज ड्रॉ करेंगे। अभी भी ये पैरेलल नहीं हुआ, फिर पैरेलल हो जाए तो স্কেলে খাতাতে করলে সুবিধা। এটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। नाउ रिफ्लेक्टेड रेज वैसे ही सुला के ड्रॉ करना, बिकॉज this is angle of incidence, this is also normal, this is the reflected ray, no, এখান থেকে, है ना, and this is the reflected ray, no, यहाँ से थोड़ा पीछे से हो गया। ऐसे अगर करोगे लाभ क्या है? इफ आई ड्रॉ नॉर्मल्स विद द इंसिडेंट रेज, कलर ले लेता हूं, normals with the incident rays, say this one, देखो this is perpendicular to this as well as this, ये दोनों ही रेज का साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए ये, हेलो, सो दिस इज AB, AB कौन है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, वेव फ्रंट तो गोल होता था ना, गोल, हाँ गोल होता था, बट इफ द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल देन द वेव फ्रंट विल बी फ्लैट। व्हाई? वेव रेज ऑफ लाइट पैरेलल कब होता है? व्हेन दे कम फ्रॉम इन्फिनिटी। तो अभी तो थोड़ा देर पहले दिखाए थे कि फ्रॉम इन्फिनिटी अगर रेज आता है तो दे आर पैरेलल, एंड फ्रॉम इन्फिनिटी if you draw wave fronts they become like this, they become like this. In that video I have shown everything with animation in detail, don't worry, that's why the wave fronts are flat ऐसे, ये 2D है, सिर्फ साइड से दिख रहा है, एक्चुअली ये तो ऐसा है, बट साइड से देखेंगे तो 2D है। एनीवे, so this is incident wave front. Similarly, we can say that this is reflected wave front, CD. How? Because this is perpendicular, this is perpendicular. ये जो दो रेज निकला ऐसे रिफ्लेक्ट करके, दोनों का साथ परपेंडिकुलर, ये दोनों का साथ, दैट मीन्स आफ्टर दैट ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ऐसे लिया, आइडिया बन गया। सो अब देखो इधर, इफ दिस एंगल इज आई, शॉर्टकट बताऊंगा मैं सिर्फ, बाकी वो 90 माइनस आई एंड आई, यू नो एवरीथिंग, शॉर्टकट ये है भाई, इंसिडेंट रे का साथ, इंसिडेंट वेव फ्रंट का साथ सरफेस का एंगल कितना होगा? आई होगा। ये क्यों? अच्छा चलो एक बार बता देता हूं, ये आई तो ये 90 माइनस आई होगा। व्हाई व्हाई व्हाई? बिकॉज दिस इज 90 डिग्री, एक साइड आई तो साइड एटा कत হবে 90 माइनस आई, ठीक है।
दैट इज 90 माइनस आई, ये पार्ट 90 माइनस आई, अगेन दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये दोनों में एंगल कितना 90 डिग्री, तो उसमें से एक अगर 90 माइनस आई हो गया तो साइड का एंगल कितना होगा आई। शॉर्टकट क्या बोला, उतना एग्जाम हॉल में टाइम नहीं है, शॉर्टकट ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट एंगल आई कर सोंगा सरफेस, सिमिलरली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा क्या, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी, हाँ उसका भी होगा, शॉर्टकट है आर, व्हाई बिकॉज दिस इज आर। लेकिन दिमाग में एक चीज रखो, वी आर टू प्रूव दैट आई इक्वल्स टू आर, वी विल नॉट एज्यूम दैट दीज टू आर इक्वल, हम लोगों को यही प्रूव करना आई इक्वल्स टू आर। ड्रॉ करने का स्टाइल दिखा रहा हूं मैं, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, चले इंसिडेंट वेव फ्रंट का भी एंगल आई, किसका साथ, सरफेस का साथ। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, this side you show I, that side you show R, do not show R there only, why, because it will get a little clumsy. So if that is R, angle of reflection, the reflected wave front will also make an angle R, किसका साथ, surface, that is the shortcut हुआ। Now your task would be, कुछ नाम दे देता हूँ, कुछ नाम कि say this is P, say this is Q, your task could be pack और quack, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है और वहां से I इक्वल्स टू R प्रूव करना है, दैट्स इट। अब ये तो क्लास 8 में दिखाने से भी कर दोगे, तो वी आर नॉट डूइंग दैट, वीडियो में डिटेल्स दे चुका हूं, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। बट ड्राइंग मेरे साथ अगर नहीं की है तो ये टोटल थिंग, इफ यू आर नॉट नाउ यू, इफ यू आर लुकिंग एट इट एंड वांट टू ड्रॉ दिस, देन ऑल्सो यू कैन ड्रॉ, बट इट वुड हैव बीन मच इजियर कि इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग। सिमिलरली ये मौका मत गवाओ, सेकेंड पार्ट रिफ्रैक्शन हेडिंग दो, फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तार माने आई इक्वल्स टू आर नहीं, अब साइन आई और साइन आर का रेशियो कांस्टेंट है, वो प्रूव करेंगे। मैं प्रूफ नहीं, प्रूफ वाला पार्ट तो मैं वीडियो में दे चुका हूं और बाकी तो 90% यहां पे कर दिया हूं। अब इट इज अप टू यू टू फाइंड टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। सास बहू की कहानी लगा देना, आई मीन सास एस साइड एंगल साइड, उसको बोल रहा हूं मैं। एनीवे, अदरवाइज रिफ्रैक्शन ड्रॉ करो मेरे साथ, फिर से बता रहा हूं, डू नॉट ड्रॉ रेज लाइक दिस, इतना इंक्लाइन रे मत ड्रॉ करो, तो सुला के ड्रॉ करो प्यार से, ऐसे। दिस वन, इफ यू कैन इवन मेक इट फर्दर इंक्लाइन, आई मीन लेस इंक्लाइन, मैंने एकदम सुला के, दैट इज बेटर। और यहां पे एक ऐसा बाउंड्री दे देना सो दैट इट इज अ डेंसर मीडियम, ठीक है। दिस इज रेयर। तो और एक रे ले लेना, दैट इज पैरेलल टू दिस, लेकिन सुला के लेना है और पैरेलल लेना उससे। क्यों समझ रहे हो? तो पैरेलल लेने बोल रहा हूं, because if you do not take these rays parallel, you cannot consider that the incident wave front to be perpendicular to both of them, इसलिए पैरेलल लो। हालांकि मेरा भी उतना पैरेलल नहीं हुआ, बट इट विल डू, डोंट वरी। तो सिंपल फिगर्स है, ठीक है। नाउ ये रेयरर का म्यू सपोज म्यू 1 है, डेंसर का म्यू 2 है, लिख लो म्यू 1 म्यू 2 लिख लो। अब कंस्ट्रक्शन पार्ट, ये नॉर्मल ढिचकाव करो, ये नॉर्मल ढिचकाव। मैं क्या बोला था, एक एक करके फॉलो करो। सेम थिंग विल बी अप्लाइड फॉर ऑल, तब तो मजा है कि मैं सीखा। इफ यू हैव टू लर्न ईच इंडिविजुअल थ्योरी विथ ईच
इंडिविजुअल लॉजिक, तब तो याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। एक ही आइडिया जो सिखाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, वह तो यहां पे ड्रॉ कर दो, कौन, वही इंसिडेंट वेव फ्रंट, नाम क्या होगा, ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट, कीपिंग इन माइंड दिस इज 90, दिस इज 90। ये लिखने का दिखाने का जरूरत नहीं है, कहीं एक जगह दिखा देना छोटा करके हो जाएगा। बाकी कीप इन माइंड दैट वी आर ड्रॉइंग ए बी सो दैट इट अपीयर्स टू एटलीस्ट परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, ठीक है। और ये दिखाने के लिए यहां पे छोटा सा ऐसे कर देना। शॉर्टकट क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो एंगल ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट भी आई ही होगा, दैट वाज द शॉर्टकट। इजी, एक ही टेक्निक सब में काम आएगा। हो गया ये। सेकंड, लेट अस नाउ ड्रॉ द रिफ्रैक्टेड रेज। भाई साहब रिफ्रैक्ट हो जाओ, हो गया ये, अब भी हो जाओ, हो गया। इसका भी पैरेलल होना चाहिए इसका साथ, मैंने कोशिश करना एज फार एज यू कैन मेक इट पैरेलल, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया। तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, कलर कौन सा था, ये लो, ये वाला। रिफ्लेक्टेड ना, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, जैसा फिनोमेना वैसा वेव फ्रंट का नाम। इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से। सो यहां से ड्रॉ करो, देखने में अब पिक्चर ना अजीब टाइप का लगेगा, गरीब नहीं पर अजीब टाइप का, सो दैट इट अपीयर्स अजीबो गरीब, दैट मीन्स ऐसा लगेगा। ये कैसा है भाई ऐसा ही होगा, बिकॉज इट हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस एज वेल एज दिस। ये दोनों तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना दोनों का साथ। ये तो 90 डिग्री और 90 डिग्री दोनों तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। तो टेक्निक क्या बताए थे, टेक्निक तो मैं बताया था, एक छोटा करके दिखा देना। हाँ, परपेंडिकुलर शुड बी शोन समवेयर, ये लेकिन करना। क्या बताया था, इधर आई लेना उधर आर लेना, बोला था। तो इधर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्या मैं ये भी बोला था कि रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सी डी, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट सी डी का भी वही एंगल होगा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, या तो रिफ्लेक्शन। हाँ बोला था, किसका साथ, सरफेस। बीच में एक एंगल छोड़ के अगला सेम होता है ना, आई टोल्ड यू शॉर्टकट। ये आर बीच के छोड़ दो, आर, आई बीच में छोड़ दो, आई, हो गया। तो ये है। अब मैं दो आइडिया बोलूंगा। एसी जो है ना, एसी, ये ऊपर वाला ट्रायंगल का भी है, इसको पॉक्स हो गया, ऊपर वाला ट्रायंगल को पॉक्स हो गया, इसका भी है, नीचे वाला ट्रायंगल का भी है, इसको क्या हो गया पता नहीं, ऐसा हो गया इसको। तो ये दोनों ट्रायंगल से एसी लिखने का कोशिश कर रहा हूं। तो अगर एसी लिखने का कोशिश कर रहा हूं ये दोनों ट्रायंगल से इन टर्म्स ऑफ आई, आई का टर्म्स में, यहां पे थिकनेस ऑफ दीज, ये है थिकनेस ऑफ द बीम, इंसिडेंट बीम, और ये है थिकनेस ऑफ द रिफ्रैक्टेड बीम। देख रहे हो थिकनेस चेंज हो गया यहां पे। सो AC को रिप्रेजेंट करेंगे, AC फ्रॉम दिस ट्रायंगल एंड फ्रॉम दिस ट्रायंगल, एंड देन वी विल इक्वेट देम बिकॉज बोथ आर इक्वल टू AC। तो देखो एक्चुअली AC इज द हाइपोटेन्यूज, तो AC का साथ अगर मैं साइन आई लिख दिया तो कौन सा साइड हो जाए, अरे ये कहां उड़ गया, AC का साथ
अगर मैं साइन आई लिख दिया तो ये कौन सा साइड को रिप्रेजेंट करेगा? ए सी साइन आई, दिस साइड. सपोज दिस इज पी, तो दैट इज पी सी. सिमिलरली ए सी साइन आर लिख देंगे तो वो कौन हो जाएगा? हो जाएगा ए डी. सेकेंड थिंग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पार्ट बताऊंगा मैं, बाकी आई लीव समथिंग फॉर यू टू थिंक, अदरवाइज यू विल नॉट लर्न. इट इज लाइक जस्ट अनदर क्लास, अनदर वीडियो, अनदर थिंग समवन इज टेलिंग यू. हो जाएगा. वेर यू गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व्ड, आई मीन अंडरस्टैंडिंग का बात कर रहा हूँ, यू लर्न दैट, यू रिमेंबर दैट. प्लीज करो मेरे साथ साथ. क्लास 12 तक ना, योर पेरेंट्स, टीचर्स मोस्टली प्लीज कर ले भाई, उद्धार करो, ऐसे बोलेंगे. कॉलेज से ना यू विल फाइंड योर सेल्फ इन जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन. पेरेंट्स व्हेन यू रिटर्न होम विल बी लुकिंग एट यू विथ एक्सपेक्टिंग आईज. कुछ सीखा ना आज कॉलेज में, बोला ना कि अच्छा कुछ हो रहा है, प्लेसमेंट वगैरह, जॉब, फ्यूचर करियर. एक्सपेक्टिंग आईज, सो वुड बी डूइंग योर प्रोफेसर्स, टीचर्स, कि कल वो कंपनी आया था, बैठा था, फॉर्म फिलअप किया, वो एड निकला है, एड दिया है, एंड देन द सिचुएशन सडनली चेंजेस. तो अभी से करो उसको, मेक योरसेल्फ आंसरेबल टू सर्टेन थिंग्स. लिखो. अब देखो आइडिया ये है, स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पे आता है, यहां पे. नाउ कम्स, वो कलर कहां गया? हाँ, ये कलर से लिखूंगा. When light travels in the same medium, its velocity remains same. But when light travels in another medium, its velocity becomes different. जो कि यहां पे भी लागू होगा. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट जो मीडियम से आ रहा है, इट रिटर्न्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इनटू द सेम मीडियम. तो क्या यहां पे वेलोसिटी अलग होगा? नहीं. तो टी सेकेंड में लाइट, फोकस करो प्लीज, इसका फोकस ना बिगड़ जाए. पिछला बार बोला था बिगड़ गया था. देखो, लुक एट हियर द बेस पार्ट. वी आर एट द बेस पार्ट. अभी छुट्टी हो जाएगा, पूजा का टाइम है, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे. बेस पार्ट फोकस करो. डिड आई टेल यू वन मेजर प्रॉपर्टी कि सारे रेज एक वेव फ्रंट में जब आएगा, ऑल द रेज विल रीच अ सर्टेन वेव फ्रंट एट अ सर्टेन इंस्टेंट. यस आई सेड. एंड एक वेव फ्रंट से दूसरा वेव फ्रंट तक जब जाएगा, बीच में रास्ता कैसा भी हो जाए, all the rays of light reach the other wave front together simultaneously at the same time. ये है property. So, look at this. मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूं मजाक से, बट उसका माने को समझो. This upper ray reached at point P. यहां पे पहुंचा. At the same time it had reached here. A, मतलब P और A तक रेज एक साथ आया. ठीक है. नाउ कम्स द स्टोरी. P to C, रेज जो गया, भी स्पीड लेके गया. यस, मीडियम तो सेम, तो सेम मीडियम में स्पीड तो सेम ही होगा. भी स्पीड लेके T सेकेंड तक गया. T कहां से आया? Let us assume that the time that this ray takes to reach from P to C is T. और स्पीड कितना है? V. मतलब PC कितना होगा? VT. If you have any question, please ask me. How did this happen, or I didn't understand that? I'll explain it again. PC equals to VT. That will happen. For same reason, this reflected ray, नीचे वाला देखो, this reflected ray, after reflection, देखो, up to this they reached together. Now when it made its way to C,
दिस रे फाउंड सम डिफरेंट पाथ कि नहीं नहीं मुझे ना ऊपर जाना है अभी से. सो दिस मूव्ड फॉलोइंग दिस पाथ टू क्यू. और वो कितना टाइम लेगा क्यू तक जाने में, वो कितना टाइम लेगा ये फोकस करने बोल रहा था. वो कितना टाइम लेगा, सेम टाइम. व्हाई? बिकॉज वी नो दैट दिस रे टेक्स t seconds to reach C, one wave front to the other, incident to the reflected. The lower ray that will also take the same time to reach from this wave front to this wave front. कितना? T. So can we say that the distance A to Q, A to Q will also be Vt. क्यों? स्पीड सेम था भी और टाइम सेम ही लेगा T. क्लियर कंसेप्ट हो गया. सो ये जो बोल रहा था दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट सास बहू बनाओ तो उसमें ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर है. कौन? दीज टू साइड्स आर इक्वल, पीसी एंड ए क्यू. एक ट्रायंगल है इधर, एक ट्रायंगल है इधर, ये दोनों में ये और ये इक्वल साइड्स है. अब बाकी तो कर पाओगे, उसलिए आई लेफ्ट इट टू यू कि खुद से बनाओ, कुछ इन्वॉल्व करो. सिमिलर मैनर में बताओ यहां पे क्या होगा. v1 स्पीड लेके लाइट आ रहा है तो बताओ इंसिडेंट वेव फ्रंट टू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट cd, ab टू cd जाने में इसको टाइम लगा सपोज t. तो pc कितना होगा? इतना होगा v1 इंटू टी. pc इक्वल्स टू, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एस इजिकल टू vt. लाइट तो सेम स्पीड से जाता है ना. v1 स्पीड लेके गया यहाँ पे ये मीडियम से जो कि रेयरर है, और ये कितना होगा? जितना टाइम लिया P टू C जाने में कितना T, तो सेम टाइम में नीचे वाला रे वो भी तो यहां से यहां तक आया ना. इंसिडेंट वेव फ्रंट टू रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, दिस विल ऑल्सो बी टेकिंग द सेम टाइम T, बट विथ व्हाट स्पीड? v2. सो दिस डिस्टेंस वुड बी v2t. कौन? AD. चले AD कितना हो जाएगा? v2t. सो साइड में ये लिख दो PC v1t PC और AD A2D, that would be v2t. ऊपर से मैच कर रहे कुछ? चलो PC बाई AD ये दोनों इक्वेशन देखो. PC बाई AD लेफ्ट साइड क्या बता रहा है? PC बाई AD क्या हो जाएगा? AC साइन I बाई AC साइन R. AC AC कैंसल. टैंग टैड़ा यहां से. लेकिन PC बाई AD ये पिंक कलर का ये क्या बता रहा है? PC बाई AD ये तो v1t बाई v2t बता रहा है. TT कैंसल. चलो v1 बाई v2. टैंग टैड़ा. अरे साइन I बाई साइन R v1 बाई v2 आ गया. वेरी क्लोज. और क्या करने से साइन I बाय साइन R, म्यू का टर्म्स कैसे आएगा? म्यू. नाउ यू आर फीलिंग दिस. क्या आएगा सर? करेंगे अभी नाउ. और जस्ट सम मंथ्स लेटर एग्जाम हॉल में बैठ के जब यही आएगा ना, तब दिमाग में इतना प्रेशर हो जाएगा विथ दैट लिमिटेड टाइम कि लगेगा कि तब अगर सोच लेते तो करो प्लीज. v1 बाई v2 से v1 μ1 μ2 का रेशियो. हाउ? ऐसे कर रहा हूं देखो, ऐसे कर रहा हूं. c बाई v2 c बाई v1. बताओ ये v1 बाई v2 आ रहा है कि नहीं? नाउ दैट यू आर सिटिंग एट होम, कुछ तो करना नहीं पड़ रहा है. ऑल द फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन बाय योर पेरेंट्स. तो कम से कम दिमाग को तो लगाओ काम में.
ये स्टाइल को याद रखना पड़ेगा। c क्या है? c कुछ नहीं, स्पीड ऑफ लाइट। सो c1 बाई v2 डिवाइडेड बाई c1 बाई v1 माने तो v1 बाई c, तो ये तो v1 बाई v2 आ गया। तो कैसे कैसे हाउ कैन यू थिंक v2 नीचे है तो c1 c बाई v2 ऐसे कर देना। चलो, अरे तो c बाई v माने तो म्यू वन कितना है? c बाई v। म्यू कितना है? c बाई v। तो हो गया म्यू टू बाई म्यू वन। दैट मीन्स इसी को म्यू बोल देंगे, साइन है साइन आर म्यू, खत्म, प्रूव हो गया। दैट इज हाउ फ्रॉम हाइजेंस प्रिंसिपल वी फाइंड। हाइजेंस प्रिंसिपल कहीं पे देखा ही नहीं। वेयर इज हाइजेंस प्रिंसिपल? हाइजेंस प्रिंसिपल लगा है काम में एक जगह पे। इट विल टेक सेम टाइम टू रीच फ्रॉम P to C as it is taken by the ray to reach from A to D। ये हाइजेंस प्रिंसिपल ही बोला है सेकेंडरी वेवलेट पकड़ के। सो यू विल बी सीइंग इन एग्जाम्स, इन बुक्स, दैट बुक्स में मिलेगा, देखना ऐसा आर्क दिखेगा, ऐसा यहां। दैट मीन्स इसको सेंटर करके ये आर्क तक आया है लाइट, एंड दिस डिस्टेंस वुड बी v2t, इतना रेडियस का। सिमिलरली यहां पे भी वही होगा, यहां पे पॉइंट करके ये डिस्टेंस v1t, एटाके पॉइंट करो এইখানে, v1t रेडियस का आर्क, और यहां पे पॉइंट करके v2t रेडियस का आर्क। ये दोनों आर्क मान लो ना, ये ऐसा ऐसा है, तो क्या क्या हम लोग किए थे कि इसको ज्वाइन करने से नेक्स्ट वेव फ्रंट मिलेगा। सो दिस हैज बीन द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आ रही है? ये देखो क्या किए थे हम लोग। नेक्स्ट वेव फ्रंट हाउ टू फाइंड? बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंशियल सरफेस to the secondary wavelets। ये कौन है? वही किए तो। अब ये पूरा गोल ना ड्रॉ करके हम लोग क्या किए? we can show them by just drawing small arcs। समझ रहे हो? स्मॉल आर्क्स ड्रॉ कर देना ऐसे ऐसे और ऐसे, so that this CD appears to be a tangent to these two arcs। टेक्निक खत्म। पत्थर तोड़ने वाला टेक्निक भी टेक्निक है, ये भी टेक्निक है। दैट इज हाइजेंस प्रिंसिपल फॉर रिफ्रैक्शन। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल वाला पार्ट खत्म हुआ। तो आई विल बी सेंडिंग यू ভিডিওস। আর ভাল লাগছে পড়তে বলো তো, সত্যি কথা বলো। আমার তো কি আছে, আই এনজয় দিস থিং দ্য মোস্ট, অ্যান্ড ইউর প্রেজেন্স অফকোর্স, ইউ আর সো গুড পিপল। এটা তোমাদের এখন বোঝাতে পারবো না, যখন তোমরা বড় হয়ে যাবে তখন ইউ রিয়েলাইজ দিস। There are students, that's why there are teachers. But please try to be good students, that is only request.